हेलो। 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 आवाज नहीं आ रही, क्या चक्कर है यार? आवाज तो खुली हुई है यहाँ पर। अब आ आवाज रही है। अब आ रही है सर। अब आ रही है। जी। हाँ, अब मेरे को नहीं सर, नहीं आ मैं ये रही। है भाई, इंटरनेट की प्रॉब्लम भी तो है यार, क्या करूं। फालतू में इन्होंने नाटक कर दिया है हमारे। लैग हो रहा है सर, नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है इस वक्त? ऑडियो इको क्यों हो रहा है? अब आवाज आई साहब? हेलो। यस सर, आ रही है आवाज। आ रही है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम लोगों को पहले किसी ने टेंसर्स पढ़ाया है क्या? नहीं सर। मैं नो हल्का सा सर। तुम्हें आइडिया देता हूँ टेंस। हाँ, सौरभ। नहीं सर, नहीं पढ़ाया गया। देखिए आप थोड़ा टेंसर्स को देख लीजिए। हेलो। सर आपका वॉइस आ रही है बार बार। हाँ, आ रही है आवाज? सर वो पिछली बार आपने जो कराया था ये उसका तो थोड़ा सिग्नल। सर नोट नहीं सर किया था। अब वीडियो जा रही है। सर लैग कर रहा है बहुत ज्यादा। तो यार ये सिग्नल तो पूरे आ रहे हैं, चक्कर क्या है? सिग्नल तो यहाँ तो पूरे 5 वर्टिकल लाइन, 6 वर्टिकल लाइन आ रही है। यहाँ तो पूरी लाइन आ रही है। हेलो। हेलो। अरे यार। हेलो। हाँ, हेलो। आवाज आ रही है? हाँ सर। सर हाँ आवाज सर। आ रही है आपकी। हेलो। सर अब आ रही है। आ रही है सर। सर आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, और वीडियो? सर जो पिछले क्लास में जो कराया था सर वो उसका थोड़ा नोट नहीं किया था सर वीडियो नोट्स थोड़ी में। सी लैग कर रही है आपकी। ओहो, कैसे करूँ? तो इसके लिए क्या करना है बताओ, मुझे आइडिया नहीं है। पिछली क्लास में क्या करवाया था? मैंने ध्यान नहीं है मुझे यार। सर डैम्प्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम कराया था ना। सर डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, अच्छा हाँ, अच्छा। उसका नोट नहीं किया था सर, उसके नोट्स भेज देना सर। मैं नोट्स नोट्स भेज दूंगा, मैं फोटो खींच के भेज जी सर। यस सर। दूंगा। हाँ, तो अभी और उसको आगे बढ़ते हैं फिर उसमें। वहां जो सॉल्यूशन आया था वो आया था हमारा AE⁻ माइनस जीटा PT कॉस ओमेगा DT माइनस 5, where omega D was root of 1 minus zeta square into P। पिछले वाले अगर, अच्छा मेरे को ये बताओ रिकॉर्डिंग कैसे होती है? इसकी रिकॉर्डिंग के लिए मुझे क्या करना है बताओ? रिकॉर्डिंग, सर ये आपकी क्या रिकॉर्ड कहते मीटिंग। हैं, एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ। सर आपकी वीडियो सर वो जो लिख रहे हो ना वो सर कुछ नहीं दिख रहा, वो बहुत ज्यादा वो हो रहा है। और सर रिकॉर्डिंग की सर आप रिकॉर्डिंग सर मिल जाएगी सर आपको, एक हमारे में से कर रहा है रिकॉर्ड पूरा। तो सर आप भी कर सकते। अच्छा, पिछली वो क्लास तो ये कहते हैं ना रिकॉर्डिंग जो है होस्ट को ही करना होता है और कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता है, सब नहीं बोलते सर, वो बैकडोर सर से। एक यूट्यूबर है सर हमारे पास, वो करता है सर रिकॉर्डिंग। हैं। एक यूट्यूबर है सर अच्छा हमारे पास, वो रिकॉर्ड कर लेता है। अच्छा अच्छा। अभी तुम्हें जी। दिखाई नहीं दे रहा है इसमें? बीटेक वालों की अभी क्लास ली है मैंने, वो तो कह रहे सब ठीक चल रहा है, पता नहीं कैसे।
अभी मैंने क्लास लिया बीटेक वालों को तुमसे पहले, तो वो तो कह रहे सब कुछ ठीक दिख रहा है, ऐसे ही पढ़ाया था हमको भी। सर ऐसे स्टडी है तो ठीक है, वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस आता है तो उसमें पूरा हो जाते हैं खराब। अब सही है सर, अभी हाल फिलहाल सही है। अच्छा, मैं कुछ भी नहीं लाऊंगा, कैमरा कंप्यूटर कुछ नहीं लाऊंगा, देखो। ठीक है। देखिए, उस दिन 3 केस बतलाए थे मैंने, उन 3 केसेस में जीटा वाज आइदर मोर देन 1, इक्वल टू 0 और लेस देन 1। तो अंडर डैम्प्ड केस के लिए ये था जिसमें कि हार्मोनिक मोशन होगा, अदरवाइज हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। ओवर डैम्प्ड केसेस में या क्रिटिकली डैम्प्ड केसेस में कोई भी हार्मोनिक मोशन नहीं होता। हार्मोनिक का मतलब है, सॉरी हार्मोनिक नहीं, वाइब्रेटरी मोशन नहीं, वाइब्रेटरी ही नहीं होता, चाहे वो नॉन लीनियर हो, लीनियर हो, कैसा भी नहीं होता। और ये फाइनल सॉल्यूशन आया था उस दिन जो हमने डिराइव किया था। पिछले वाले नोट अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है तुम्हारे पास कहीं, तो मैं भेज दूंगा। अब इसमें क्या है कि जो मैंने उस दिन बतलाया तुम्हें कि जो फाइनल सॉल्यूशन है वो ग्राफिकल फॉर्म में, एक तो जो फर्स्ट फंक्शन है उसका ऐसे आएगा, एक कर्व आएगा इसका माइनस जीटा पीटी with time x. So this first function will provide or will give you the envelope, and the second function means this value of phi and a will depend upon the initial conditions, and then maybe from here or from any point this will start depending upon the initial conditions, and this amplitude will keep on decreasing. So this is called exponential decay. We call it exponential decay because this e to the minus zeta pt is deciding the decay, and we call it exponential decay of amplitude. Now this result is quite useful in day-to-day life in experiments. And how it is useful that suppose we have a cantilever and we mount one accelerometer here. This accelerometer, and then if we disturb it and leave it free, then the cantilever vibrates. But because of inherent damping, material damping in the cantilever, and it's a case of free vibration because we have left the beam to vibrate after disturbing it from mean equilibrium position. So its amplitude keeps on decreasing, and this is your accelerometer. Accelerometer. It gives you acceleration A. This A is reduced by a code, using a code. It is reduced to velocity and then position. We are concerned here with the position. This kind of code you can find, you can check on Google in MATLAB, that how to convert acceleration into position and velocity. एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर वो एक है, वो सिद्धेश का है सर, वो अलाउ मतलब ज्वाइन करने के लिए मांग रही है। मुझे क्या करना है बताओ? अलाउ कर दीजिए उसको। अच्छा, उसको फिर से कहो रिक्वेस्ट करने के लिए, ताकि मेरे पास वो दिख नहीं रहा, आइकन नहीं दिख रहा उसका रिक्वेस्ट वाला। पर मैंने सबको भेजा है, फिर उसका क्यों नहीं खुल रहा? क्लास की लिस्ट में सबका नाम है, फिर उसके पास लिंक क्यों नहीं पहुंचा? हेलो, सर पता नहीं सर। हाँ बोलो, उसे बोलो मेरे को फिर से रिक्वेस्ट भेजे, मैं उसको यस करता हूँ। यस सर, बोल दिया मैंने उसको। 19 तो है ऑलरेडी, पर जब लिंक सबके पास पहुंच गया है तो खुल जाना चाहिए यार। सर ज्वाइन हो गए। हाँ, सुदेश ना है, हो गया? यस सर। जी सर, हो गया।
अभी तो यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स है, सडनली चले गए सब। 8 और 4 12 और 4 16 है और 2 18 18 है अभी। चलो कोई जो भी है ठीक है। तो ये बात देखिए आप, मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन whose initial conditions will decide the value of a and phi, means x and x dot at equal to 0 must be given, or at any time it is must be given. We can decide a and phi, and then substituting a and phi, we draw the curve. This is the final curve. But theoretically speaking, this expression e to the power minus zeta pt is deciding the limit at any time. What is the amplitude that you can decide from here? All right. Now I am taking an example of cantilever. On this cantilever, there is one accelerometer mounted at the end, and this accelerometer will give you acceleration with time. Means acceleration with time. This acceleration pattern you will get in the form of data, because accelerometer and all these experiments you must have done in vibration. And then you can see that we get a series, means a column we get in Excel. In one column there is time, which is independent parameter, there is one dependent parameter. And from this data which you are getting in the form of table, this data can be converted to velocity with time and position with time also. Then position versus time is drawn. Position versus time is drawn like this. And then from the above analysis, this is damped natural frequency, we can calculate the time period t, that is 2 pi upon omega d. Now acceleration, or sorry, position at any time moment. Suppose maxima we want to find out. Maxima means when this value is 1. Cos omega t minus phi must be equal to 1 to get the maxima. So suppose x1 maximum, this is 0.1, this is 0.2, like this. So x1 maxima will be a e to the power minus zeta p and t, suppose t1. And then x2 maxima will be equal to a e to the power zeta p t1 plus t. This td also you can write down. td means this is your time period of damped natural vibrations. Now if I take x1 upon x2, which is called logarithmic decrement. Logarithmic decrement, it is basically decrement. This is not logarithmic. अभी चलने दो इसको ऐसे ही, बाद में आएगा log. And then if I take the ratio of these two quantities, a is cancelled, t1 is cancelled, and finally I'll get e to the power plus zeta p td. And if I take log on both sides, log x1 upon x2, that will be equal to zeta p, and td is 2 pi upon under root of 1 minus zeta square into p. So this, sorry, pp is cancelled, and final quantity remaining is 2 pi zeta upon root of 1 minus zeta square. When zeta is very small means 0.01, 0.02, very small, means this difference is close to 1, then we can neglect this denominator, otherwise not. क्या हुआ? Admit.
And this quantity log x1 upon x2 is called logarithmic. Logarithmic decrement. इसकी स्पेलिंग मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रही है. Logarithmic decrement means if you just measure the value of amplitude at two successive levels, which is a bit difficult to measure, but suppose we measure it, then we can find out the value of zeta, means damping associated with the system. Now, as I have told you that it is quite difficult to measure the amplitude of two successive peaks. So what we do, we take this x1 and then suppose x10 मान लीजिए. After 10 cycles, suppose we measure the amplitude at two locations of time. One is here, second is somewhere here. This we can write down as x1 upon x2 into x2 upon x3 into x3 upon x4 and x9 upon x10. The important point to discuss here that this x1 upon x2 means this right hand side quantity is function of only zeta. It does not depend upon that where from we start measuring the amplitude. It could be x1 upon x2 or x2 upon x3 or x3 upon x4. It should be just two successive. This T1 can be located on this abscissa anywhere corresponding to maxima. But these two should be successive. So this is true. Right hand side is true for any two successive peaks. So this quantity is also 2 pi zeta upon root of 1 minus zeta square. And if I multiply the same quantity, how many times? x1 upon x2, x2 upon x3. How many gaps we have taken? x1 to x4. How many gaps? 3. If it is x1 to x10, it means we have taken 9 gaps. 9 into time period. Yes, sir. All right. Sometimes authors write this quantity as x0 upon x10. x0 means the starting point is 0. In that case, this सर subscript. सर ऊपर वाला एक बार फिर से बता दीजिए. मैं कह रहा हूं कि this is the first point, suppose, and after 10 cycles, the amplitude is x10. ऊपर वाला दिख नहीं रहा सर. थोड़ा एक मिनट. थोड़ा नीचे कीजिए सर. थोड़ा सा. जी सर. हो गया. देखिए x1 is the amplitude at point 1 and after 10 cycles the amplitude is x10. So you have traversed the system for 9 cycles. And this x1 upon x2, x2 upon x3, x3 upon x4, for each fraction, the right hand side value is same. It is not changing. So this ratio is coming 9 times. 9 times means that this quantity is to be multiplied 9 times. So you can make it this quantity to the power of 9. And some of the authors, what they have done, they have started this ratio from 0 to 10. And then they give you after 10 cycles, the amplitude is x10. So in that case, you can write it 2 pi zeta upon root of 1 minus zeta squared to the power of 10. So don't get confused by different authors. Some of the authors are starting from 1, then here it will be n minus 1. N means, suppose this is n. What they are writing, x1 upon xn and or x0 upon xn. So if it is written x0 upon xn, then here it is n. If it is x1 upon xn, this is n minus 1. Got it? Yes sir. Hello? Yes sir. हेलो. Yes sir. तुम्हारी इसके बाद में क्लास तो नहीं है?
क्लास है सर 11 बजे। मैं कह रहा हूँ तुम्हारी इसके बाद दिनेश की। यस सर, क्लास है अभी। जी सर। तो फिर नया आर्टिकल तो शुरू नहीं कर सकते अभी। आज डेट क्या है? 5/1/1/5/1/2। और तुम मालूम करो कि पिछला लेक्चर रिकॉर्डिंग है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर मैं भेजूंगा कॉपी क्या, तो देख लेना उस लेक्चर से ही नोट करोगे, ज्यादा फायदा होगा। आदित्य रिकॉर्डिंग है क्या? सर ये पावर में सर क्या कह रहे हो? सर ये इसमें लॉग लेंगे तो ये पावर में 9 की जगह मल्टीप्लाई में 9 आएगा ना। इसमें तो लॉग लेंगे तब जाकर के 2 हाँ पाई हाँ, सॉरी सर। हाँ लॉग आएगा, लॉग। सॉरी सॉरी, लॉग चलेगा इसका। मेरे तो को सर मैं वो बहुत लेट पावर आया क्लास। सर फिर वो पावर की जगह मल्टीप्लाई में आएगा ना, जो 9 जो आ रहा है। भाई ये लॉग में जो है क्वांटिटी इसके बराबर है, तो हाँ कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गया ये। देखता हूँ अगले टाइम में बदला दूंगा सबको। मुझे वो टाइम का प्रेशर आ गया थोड़ा। ओके सर। अगले टाइम पर टाइम से शुरू करता हूँ। हमारी क्लास है फ्राइडे को ना। जी सर। हाँ तो फ्राइडे को मैं बदलाता हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक। ये सब बदल जाएगा। ये लॉग में चलेगा फिर। आदित्य रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग है क्या पिछले लेक्चर की? हाँ इसने डाली थी ना पिछले लेक्चर की उसमें ग्रुप में। सर वो सेंड कर ठीक है दीजिए। सर। हाँ वो रिकॉर्डिंग मेरे पास ही भेज देना है। यस। बट सर पिछली बार तो लाइट चली गई थी ना। अभी किसी क्लास है? एनकेआर सर की। NKR सर। सॉरी।